Okay, so just check it out whether I'm audible. Can you hear me? Just check it out and then we start. Okay, so now let's start our session, and this session is going to be wonderful. Okay, that's fine. So this session is about management institutes, how we can enter into management courses in different institutes, why we should enter there, and can we enter or can we not. Before I start my session and I show you some of the opportunities, not all the opportunities, some of the opportunities related to management and industrial engineering courses in reputed institutes, let me tell you certain things. Number one, all branch of students can join these courses. Let me repeat, all branch of students, any branch of engineering and even science background, even humanities background, people can join these courses. Number two, gate score is not a criteria. Let me repeat once again, gate score is not criteria, low or high in many of the institutes. In some institutes, obviously it is criteria, but in many institutes it is not. That means student with very low gate score can also think of getting in these institutes. Number three, if you compare all the placement statistics, if you compare all the placement statistics, the best jobs you can get are through management courses. Best jobs you can get are through management courses. I also want to tell you, student put lot of effort to get into IIMs. They put lot of effort to do MBA from IIMs. Spend 25 lakh, 30 lakh rupees fees. But you know what we have observed is that equally good opportunities you can get from institutes like NITIE Bombay, IEOR IIT Bombay, from DOMS, IIT Madras, IISc Bangalore. Equally good opportunities you can get there, especially if you link the latest technologies with management, something like data science, something like artificial intelligence, machine learning, IoTs, blockchain. If you link it with management, you can get better jobs than IIMs in the IITs and these institutes, even NITs. Because nowadays, if you see, IIMs are open to all branch of educations, all domains of education. Even commerce graduate, arts graduate can enter into IIMs. But in IITs, normally engineering students go. NITI may only engineering students go. So engineering students can do wonderfully good in data science and all these branches. And hence companies are paying really good. Many students ask me, sir, I have a gap in my career. Will that affect my job later on? Answer is yes and no. Yes, because many companies will not let you sit. No, because many companies will let you sit. And how many companies do you want? Sir, I only want one job. That you will get it. So, will your gap affect your jobs? Yes, many companies will not let you sit, but many companies will let you sit. So now whatever is there is there. Just focus on the next strategy. And we focus on application in these institutes. So now there are so many institutes where we are to apply, we can apply, and we can get very good jobs. Some of the top rankers, like single digit, double digit rankers, they always look for what are the best opportunities for us. So such high rankers can always, till they get into PSU, or even if they don't want to get into PSU, because GATE is not always written for getting into PSU. GATE is not written only to get into PSU. So there are many of you who want to get even better, placements. If your all India rank is, let us say,
20, or let us say 2, and you land up in IOCL or ONGC. I'm not here saying anything against public sector jobs. They're very good jobs. But growth, kind of growth which you can get from some courses here, like NITIE Bombay, IEOR, etc., you can get jobs of 50 lakh per annum also. And people are getting 45, 50 lakh per annum. You can take this as one of the option. You can think of this. The rest is your interest. I'm not saying that if you're interested in, let us say, design, or computer science, or data science, or structures, or VLSI, you leave that and join management. I'm not saying that. But I'm saying that if you have inclination for management, growth is very high and there are many opportunities. I came to know that general category students, even with 400 plus GATE score, are getting calls from some of the departments. I will tell you today. But there is an interview, there may be written test, there is a research proposal, there is a statement of purpose which you need to frame. And then if you do good in that, you can get into these courses. Those of you who are targeting public sector, but till you don't get public sector, you want to get a platform, for them also this can be a very good option. For them also this can be really good option. So those of you who are targeting for public sectors, but in the meantime they want to sit at some place and prepare, for them also it is a very good opportunities. Is there group discussion and kind of things in process? See, NITIE Bombay used to take group discussions, but for the last 2 years, lockdown, COVID, they have not taken. This year also, the chance of group discussion are less. But IISc Bangalore can take group discussion this year for their Masters of Management. And that is going to be online. Let me tell you, it is going to be online this year. The interviews, GDs, everything is going to be online. What kind of questions are asked in the interviews? I have made a series. Already 3 videos are uploaded on that series. The expected management related questions. And they are questions on the basis of the last year feedback of students. I have provided you all those questions. Listen to those videos and you can prepare well. Entire learning content is kept on the panel of YourPedia and you can prepare very well for that. You should write the CV or the document which they are sending you very carefully. Whatever institutes are asking you to write your extracurricular is very important for management institutes. For IITs, MTech courses and all, extracurricular is not required. It is not very important. But for public sectors, for management institutes, the kind of extracurricular you are writing is very important. HR is very important for these institutes. So whatever institutes you are applying, make sure that these particular things are properly written. In your introduction, you will get the chance for introduction. Many of these management institutes are having their interviews. Majority of these, 80%, you will come across the interviews. In the interview, introduction is the expected question. All the other questions after introduction will be based upon introduction. In the typical introduction, they expect that you should tell something what you have done in the past. What kind of skills do you have? मैनेजमेंट स्किल्स जिनको बोलते हैं, आपने ग्रेजुएशन में कभी मैनेजमेंट स्किल्स डिस्प्ले किया? आर यू द राइट मटेरियल फॉर दिस कोर्स? दैट इज व्हाट दे चेक. एंड हाउ डू दे चेक दैट? इज थ्रू योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज and whatever you say in the introduction. That's sir, in my final year, this is what I did. I was a part of this. I was a part of this society. I was a part of this program. I organized a conference. I was continuously involved in this particular activity. So these are the things which you can say to impress the interviewer for management courses. अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च पेपर से इंप्रेस कर सकते हो. अगर आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इन
अपनी जो स्किल्स हैं उसके थ्रू आपको इंप्रेस कर सकते हो. सो यू आर टू बेसिकली इंप्रेस अदर्स यूजिंग these skills. Now, how many institutes are there in which management courses are there in India through GATE and even without GATE? Let me tell you, you can enter into IIMs where the exam is CAT, but you can enter through GATE also. You can enter into IITs like DOMS, IEOR. You can enter into NITs. You can enter into IIITs. You can enter into private institutes like Birla Institute, Vellore Institute. There are two main departments which are related to management, which are everywhere. Two main departments. One is obviously the management department. Another is industrial engineering department. Now, if I talk about IISc Bangalore, they call this department as Masters of Management, Department of Management Studies, and they offer you Masters of Management. Department of Management Studies, IISc Bangalore. If I go to IIT Madras, they call it Department of Management. If I go to IIT Delhi, they call it DMS, Department of Management Studies. If I go to IIT Bombay, they call it Industrial Engineering Operations Research. So where is the industrial department in IIT Delhi? Industrial department in IIT Delhi is under mechanical engineering department. So sir, as a chemical engineer, as an electrical engineer, can I join industrial engineering department of IIT Delhi? Answer is yes. So all of you should look for industrial engineering department, management studies department if you are interested in management. There is another way by which you can enter into management courses of these departments. One is through MTech, another is through MS, then there is a PhD, which is also called fellowship program in management in IIMs. और सारे IIMs का भी फॉर्म खत्म नहीं हुआ, बहुत से IIMs का फॉर्म बचा है अगर आप PhD में इंटरेस्टेड हैं. एक और तरीका है by which you can enter these, that is through project under professors. Professors are having very good projects. They are having those projects, and you can approach the professor for doing project under his guidance. And the moment you do project, and if you do really good, you can get into the MS programs of these institutes. That is also one of the ways by which you can enter there. So these are some of the ways in which you can enter into the management courses. So as I told you, you can enter through MTech course, you can enter through MS course, you can enter through PhD course, and fourth, I'm telling you, you can enter through projects. What kind of GATE score is required for some courses which are MTech courses? Very high GATE score may be required. This year maybe 750 plus in some of the departments. Because this year the GATE scores are coming less, so cutoff will also go less. Like in NITIE Bombay, I think whatever cutoff was there last year, I think 20-30 less will go. General category NITIE Bombay, maybe you can think of getting call at 725, 720 also. You need to take a chance. And I don't think last year NITIE Bombay is going to release the cutoffs. Last year उन्होंने cutoff release किया था, but I don't think this year they are going to release it. गर्ल्स के लिए उन्होंने 700 बोला था, तो मेरे को लगता है जनरल कैटेगरी की गर्ल्स कैंडिडेट के लिए NITIE Bombay may be open at 670, 680 also. Now, I think there are some departments like DOMS. There are some departments like DOMS in which this year DOMS में there is no MTech, there is only MS. MS के लिए you do not have only the MTech, you do not have only the GATE criteria, there is a CGPA criteria also. And as we discussed, interacted with one of the students, as per him, even students, general category student with 450 GATE score
are also sitting in the management courses of DOMS IIT Madras. That does not mean everyone with 450 GATE score will enter into that. That does not mean that. Because in IIT Madras, they give very high value to statement of purpose which you are going to write. Why you want to join this course? This is going to be very important even in NITIE. Why you want to join NITIE? Why you want to join IIT Madras? You need to be very well prepared for those answers. Because interviews are going to be there, and this is going to be a really important question for all of you. Now, on the basis of some of the institutes, some of the courses I'm going to show here, not all, some of the courses. And as per my analysis, there are at least 50 departments, 50 departments of industrial engineering and management, in which if you take admission, the placements are, average placements are more than 15 lakh per annum. I'm giving this statement with full data with me. There are 50 institutes in India as of now, in which if you take admissions, and I'm not saying through CAT, I'm saying through GATE, and their own exam for technocrats, in which if you take admission, industrial engineering, operation research, construction management, these kind of courses, there are 50 such institutes in which if you take admission, the LPA is 15 plus LPA. There are very good state colleges also. I'm going to show you some. I've not covered all. I'm going to show you some of the institutes here. NITIE Bombay, as you know, there are 2 courses in NITIE Bombay. As you know, one course is the PGD IE and PGD SM. These are the 2 courses NITIE Bombay in which you can apply. This is normally one of the best choice people go for. But NITIE Bombay, IISc Bangalore, IIT Bombay, DOMS are equally good. They are equally good, but only thing is NITIE, they have made their big name in supply chain management. And why NITIE is first choice of students? Because NITIE के लिए this is the flagship program. The main program is this. NITIE में ग्रेजुएशन नहीं होता, NITIE में यही होता है, और यही उनका मेन कोर्स है, और इसी के ऊपर उनका मेन फोकस है. IIT बॉम्बे में मेन फोकस IEOR पे नहीं है, MTech पे नहीं है, मे बी इट इज ऑन ग्रेजुएशन ऑल्सो. बीटेक भी होता है वहां पे IIT में. IIT में बीटेक भी होता है. प्लेसमेंट सेल इज ऑल्सो बॉदर्ड अबाउट बीटेक प्लेसमेंट्स. NITIE में दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट PGD IE प्लेसमेंट. IISc में रिसर्च पे फोकस है, प्लेसमेंट हो जाएगा, डोंट यू वरी. लेकिन हम बोलते हैं ना कि फोकस उनका प्लेसमेंट पे नहीं है. प्लेसमेंट हो जाता है, नथिंग टू वरी, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट मेन फोकस प्लेसमेंट पे नहीं है. लेकिन NITIE का मेन फोकस ही प्लेसमेंट पे है. तो एक तो ये तुम अप्लाई करना है इसको. उसके बाद IISc बेंगलोर में 2 कोर्स हैं. PhD भी होता है मैनेजमेंट में. आप में से जो लोग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में फैकल्टी लगना चाहते हैं और जिनका CGPA अच्छा है, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं. एक IIMS के अंदर फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एंड सेकंड इज IITs के अंदर PhDs में आप जा सकते हैं. इवन NITIE में भी PhD होता है, you can get into that also. But PhD, as I told you, you should, it's a commitment वाला काम है. If you are interested in academics, research, and you are patient enough to go, then you should go into these courses. मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट में 2 तरह के कोर्स हैं. एक MTech है और एक MTech रिसर्च है, जिसको MS बोलते हैं. IISc के अंदर ये दोनों ही हैं. MTech हाई गेट स्कोर पे जाएगा, इक्वलेंट टू NITIE बॉम्बे, मे बी मोर देन दैट, बिकॉज NITIE ज्यादा बच्चों को बुलाता है. NITIE में देयर आर 200 प्लस सीट्स, बाकी जगह उतनी सीट्स नहीं है. लेकिन देयर इज MTech रिसर्च ऑल्सो, MS, और मैं कई बार बोल चुका हूं, MS इज बेटर देन MTech फॉर प्लेसमेंट. MS is better than MTech for placement. So if you're interested in placement, maybe you can join MS.
and then PhD, as I told you. IIT Bombay में you will get two courses in which you can go for management. One, industrial engineering and operation research तो है ही, एंड वहां पे MTech, PhD और MSc PhD भी होता है MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के लिए. MTech RA, let me confirm about that also. MTech RA in IIT Bombay, you will get a call for if your CGPA is high. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में MTech होता है, तो अगेन देयर इज अ डायरेक्ट MTech फॉर दैट. एंड एज आई टोल्ड यू, और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए यू बी रेडी फॉर इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू वहां पे होगा. दैट इज हाउ यू बेसिकली आर टू गो फॉर दैट. अगर मैं IIT मद्रास की बात करूं, देयर इज MS ओनली, देयर इज नो MTech. देयर इज MS कोर्स ओनली इन मैनेजमेंट. उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो मंगवाते हैं, 5-6 स्पेशलाइजेशन है, 5-6 स्पेशलाइजेशन. आपको किसी एक में चूज करना है और आपको यह बताना है कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन. एंड बिलीव मी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर देम. उसके बेस पे ही सिलेक्शन हो जाता है. लास्ट ईयर इन डॉम्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड दिस इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग ऑन द बेसिस ऑफ द सिटिंग स्टूडेंट ऑफ IIT Madras. There are students in the class with 450 GATE score, general category, and there are students with more than 800 also. सेम क्लास के अंदर 450, 850 GATE score, सेम कैटेगरी बैठा है. Now there are many negative souls. There are many negative souls who keep on saying नहीं नहीं हमारा नहीं होगा, उसका हो गया हमारा नहीं होगा, उसी का हुआ हमारा नहीं हो सकता है. My request is be positive. Be positive if you really want to explore the options. Don't be negative. Don't be negative. If somebody can get it, you can also get it. Only thing is you have to follow the process. There is a process and a route. Like many of you are having 9.8 CGPA, 100% call आता है. It does this high CGPA and merely get qualified पे you get surely calls. So IIT Madras का मैंने आपको बता दिया, there is MS, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उसके लिए रिक्वायर्ड है. मेलिंग द प्रोफेसर वर्क्स, मेलिंग द प्रोफेसर वर्क्स. वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट रेगुलर सेशन विच आर फ्री सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, इवन इफ यू हैव नॉट टेकन द कोर्स ऑफ YourPedia. तो कैसे मेल करना है और कैसे एकेडमिक CV बनाना है, ये मैं सब बच्चों को करवाने वाला हूं. राहुल इज गोइंग टू टेक दैट सेशन, और इसको मैं सब बच्चों को करवाऊंगा. व्हाई? बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपको फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए. एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन इंडिया, आई एम नॉट सेइंग इंडिया में हमें फोकस करना है. देयर आर 500 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में जहां बहुत अच्छा स्कॉलरशिप तुम्हें मिलता है. यू कैन गेट वेरी गुड स्कॉलरशिप्स देयर, better than IITs, better than IITs. So many universities which are better than IIT Bombay, IISc Bangalore. Huge competition for IIT Bombay. There's a huge competition for IIT Bombay. But then there are so many foreign universities which are better than IIT Bombay. And competition is very less. So अगर तुम्हें मेलिंग द प्रोफेसर आ गया, अगर तुमने एकेडमिक CV अच्छा बना लिया, तुम्हें वैसे ही अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है. वो YourPedia भी सबके लिए फ्री करने वाला है, सब बच्चों का सेशन करने वाला है. जिसको बनाना है वो अच्छा तरीके बनाओ और मेल करना स्टार्ट करो प्रोफेसर्स को, एंड इट वर्क्स. नाउ IIT मद्रास में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसमें MTech है. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है. यू नो मेनी पीपल से भाई सिविल इंजीनियरिंग को जॉब नहीं लगेगा, वो तो ओनली कंप्यूटर वालों को लगता है. यू नो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इफ यू एक्वायर द स्किल्स, इफ यू एक्वायर द प्रॉपर स्किल्स, you get very good jobs from these institutes, because construction management is the booming sector nowadays. There's a big boom in this sector, and in this particular sector there are so many good jobs and good opportunities. Now let's come to IIT Kanpur. Industrial management, it is called IM, industrial management. There is MTech, MBA भी होता है, बट नॉट मे बी थ्रू गेट. MTech है और डायरेक्ट PhD है. दो चीज बताऊंगा. वन, स्टूडेंट PhD में एनरोल करने के बाद थ्रू सर्टन रीजंस वो उसको मास्टर्स में कन्वर्ट करवा के
वो मास्टर्स में कन्वर्ट करवा के भी जाते हैं. So, but then that is not a normal routine. That is not a normal routine. Many of you ask me कि सर क्या PhD ज्वाइन कर लें तो MTech में MS में कन्वर्ट हो जाता है? आंसर है हो जाता है, लेकिन that is not a normal routine. नंबर 2, अगर आप इन रूट्स के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप प्रोफेसर के थ्रू भी अंदर एंटर कर सकते हो. आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगा. जो 12,400 रुपया मिलता है मंथली वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD देती है. आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप मिलेगा. Professor will give you the assistantship. So what you get is project assistantship. You will not get teaching assistantship, but project assistantship. IIT Kharagpur में there is a Department of Industrial and System Engineering. MTech है, MS है, डायरेक्ट PhD है. मैंने आपको बताया जहां पे भी MS है वहां पे लो गेट स्कोर वाले के पास अपॉर्चुनिटी है. क्या करना है? प्रोफेसर को देखना है जिसका काम तुम्हें अच्छा लगता है. प्रोफेसर को मेल डालना है. प्रोफेसर तुम्हारे गेट स्कोर को बॉदर नहीं करता. तुम्हारा गेट स्कोर उसको दैट इज नॉट गोइंग टू इंप्रेस हिम. योर रिसर्च वर्क इज गोइंग टू इंप्रेस हिम. तो प्रोफेसर को तुमने मेल डाला कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, आई वांट टू वर्क अंडर योर प्रोजेक्ट गाइडेंस. दिस इज द वे यू कैन एंटर देयर ऑल्सो. जहां पे भी MS है वहां चांस है. IIT रुड़की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट. IIT धनबाद, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वो डायरेक्ट MTech है. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, बिकॉज इज अ डायरेक्ट MTech इन IIT धनबाद, उसका गेट स्कोर बहुत ज्यादा जाता है, और जो डॉम्स का गेट स्कोर बहुत कम पे भी कॉल आता है, कम पे भी कॉल आता है. दिस इज हाउ इट गोज. नेक्स्ट वी गो टू IIT गुवाहाटी. अगेन IIT गुवाहाटी में MS है. तो अभी कितनी जगह पे MS मिला हमें? IIT गुवाहाटी में MS मिल गया, IIT खड़गपुर में MS मिल गया, IIT मद्रास में MS मिल गया, और IISc बेंगलोर में भी MS मिल गया. MS का बेनिफिट क्या हुआ सर? MS मिल गया तो कम गेट स्कोर पे कॉल आएगा, चांस है हमारे पास. IIT BHU वी हैव MTech ओनली. मैं आपको IIMS की बात बता रहा था. IIMS के अंदर फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करके कोर्सेज हैं. कुछ IIMS का डेट अभी भी बचा है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD कोर्सेज, बट दे आर PhD कोर्सेज 4 to 5 years. यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट. IIIT लखनऊ में भी PGD BM है, बिजनेस मैनेजमेंट. IIIT, इसका मतलब और भी IIITs हैं. मैंने आपको बताया कि मैं सारी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं यहां पे. इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो मेरे को बोलेंगे कि सर आपने सारा फ्री यहां पे बता दिया, बट जो आप जानते हैं उनको पता लगेगा कि वो सारे ऑप्शंस हैं. मैंने आपको बताया 50 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 50, और हर जगह पे, कई जगह पे 20 है, कई जगह पे 30 है, कई जगह 200 सीट है, कई जगह पे 200 सीट है, 200. सो यू हैव द अपॉर्चुनिटीज देयर. IIIT हैदराबाद, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट. लेकिन IIIT हैदराबाद मेरे को नहीं लगता है PDM इस बार ले रहा है. उन्होंने लिखा है अभी नहीं ले रहे हैं. मे बी कुछ पिछले साल स्टार्ट किया था इन्होंने, आई थिंक स्टूडेंट्स नहीं थे, आई डोंट नो द रीजन, बट अभी नहीं ले रहा है. NIT वरंगल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, NIT वरंगल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. NIT सूरतकल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. NIT कैलिकट का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इज अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. NIT कैलिकट का IEM इज अ वेरी रेप्यूटेड. ये गेट के बेस पे, CCMT के बेस पे मिलेगा. कुछ में MS भी है, कुछ में सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है. बहुत से बच्चे जिनका गेट नहीं है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड, दैट इज ऑल्सो देयर, सेल्फ स्पॉन्सर्ड. NIT रायपुर IEM इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. NIT सिलचर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. जहां पे भी मैनेजमेंट स्टडीज है, इफ यू हैव एनहांस्ड योर स्किल्स, आपको जॉब लग जाएगा 100%, और बहुत अच्छा जॉब लगेगा. मैंने आपको बताया एवरेज 15 लाख पर एनम प्लस. आई एम टेलिंग यू दैट विद फुल माई रेस्पॉन्सिबिलिटी.
if you increase your skill, that is my rider actually. If you say नहीं सर मेरे को ज्वाइन करना है लेकिन पढ़ना कुछ नहीं है, मेरे को 15 लग जाएगा, नहीं लगेगा. You need to acquire something. Company आएगी and company will place you. Students, I have interacted with these students and they have given that information that this is what is happening there. Now many students do not have GATE score. Vellore Institute of Technology, there are management courses, and Vellore is also fast coming up like Birla Institute of Technology. So in the private universities, placement जहां पे अच्छा है जो हमें पता लगा है वो एक तो बिरला इंस्टीट्यूट्स में है, उसके 3 कैंपस हैं, पिलानी, हैदराबाद, गोवा. नो डाउट पिलानी पुराना कैंपस है लेकिन प्लेसमेंट कंपनी सब जगह जाती हैं. हैदराबाद एंड गोवा में ऑल्सो यू गेट द सेम कंपनीज, and if your skill is good you can get same opportunities. Then Manipal Institute of Technology, engineering management, construction engineering and management. Engineering management, Manipal Institute of Technology, you can get that MTech in that, and the companies are visiting, placement is there and the good placement is there. Then Jadavpur University, and then there is a Shivpur also. And similarly in every state one or the other good universities there. We should be very clear what our agenda is. Our agenda is to get good placement. We need to get very good placement, and I'm saying good placement which is 15 lakh per annum plus. And for management there is nothing core and non-core. Technical field mein there can be core and non-core, but for management there is nothing core and non-core. The moment you join management course, for you everything is core. You need to acquire the skill and you need to go there. So they offer some kind of postgraduate diploma in management and entrepreneurship. So that is also Jadavpur University also, this is one of the domains. There is a department of management in BITS Pilani also. There are certain courses in that also, and in each campus these are the courses. So there also you can apply. So now what are the options with us for management? We have IITs, we have NITs, we have IIITs. I've shown you that. We have private universities. In all these you can go. And those of you who are targeting foreign universities, management courses in foreign universities, those who are targeting masters in foreign universities, management courses are the best to pursue and you get very good placement from there. Management courses. Those who are targeting that, let me tell you, there are so many MS programs abroad in management. In my opinion, you should acquire certain skills. Coding सीख लो थोड़ी सी, कुछ languages सीख लो. If you do that, then there are so many opportunities you can explore in these particular universities. So I think it can be wonderful if you explore all these options, and they are really very, very good for you. This is how it all goes. So as I told you, these are all the departments and these are all the basically courses, and there are so many more courses related to this, and you should apply there. There are so many students who say, sir, management में मेरे को नहीं जाना, मेरा interest नहीं है. Please ask yourself once again, because this is a natural choice for many branches. Mechanical, civil, chemical, all these people, and computer science people, these are the choice. So if I divide entire now admission process, I can divide it into 3 categories. Number 1, technical subjects in technical domain. जो आपकी अपनी डोमेन है, स्ट्रक्चर में चलेंगे, VLSI में चलेंगे, कंट्रोल पावर सिस्टम में चलेंगे. नंबर 2, मैनेजमेंट कोर्सेज. नंबर 3, डाटा साइंस रिलेटेड कोर्सेज, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस, artificial intelligence, machine learning. Sir, if I want to get into management course, do I need to learn something extra? Yes, some management related things you should know. Some management related terminologies you should know. That I will provide you. I will provide you on my website only. We'll keep it on the website. Those of you who want to take that, they can take those and you can study that. Lot of HR and mocks I'm already putting on our new channel. You can see that also. And those of you who are registered with YourPedia, please start continuously
taking the mocks and HR so that you are prepared. For data science and machine learning and artificial intelligence, please prepare these subjects before you join masters, because even if you get the admission, if you are not ready with this, you may not get job or you may not continue there. वहां पे आपको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा. एंड टेक्निकल तो तुम्हें आता ही है, टेक्निकल तो तुम्हें एडमिशन लेके यू कैन गो इनटू दैट. टेक्निकल इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू. दिस इज हाउ इट ऑल domain can be done, and this is how you can approach for that. Okay, now I think let me see if some of you have queries there. See, life science में 365 पे certainly you will get if your CGPA is good. You have not mentioned Yogesh your CGPA, you can get that. SC category 314, top SC category, you need to see your CGPA also. Aerospace में if your CGPA is more than 7.5, you will get call from 7 old IITs. Let me tell you this way, I can see all your queries, and let me tell you this way, if your CGPA is this, I'm telling you, first journal category student, all branches, journal category, all branches, I'm telling you first, if your CGPA is more than 8 plus and GATE 400 plus, तो आपको ओल्ड IIT से कॉल आता है. सारी कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी, ऑल ब्रांचेस, CGPA 8 प्लस एंड 400 प्लस गेट स्कोर अगर आपका है तो आपको ओल्ड IITs में से कॉल आता है. अब ये कौन सा डिपार्टमेंट होगा जहां से कॉल आएगा, ये आपको अकॉर्डिंगली भरना है. यू हैव टू फिल इट अकॉर्डिंगली, बट यू गेट कॉल ऑन द बेसिस ऑफ अवर नॉलेज. वी नो दैट पीपल गेट अ कॉल. इंटरव्यू भी होता है वहां पे, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन कन्वर्ट इट. यू नो, you should not apply in many departments blindly also, because वहां पे बहुत पैसा खर्चा आता है अगर तुम सारे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे. डोंट डू दैट. सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग सर हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स शुड फिल. कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे IISc में यू कैन नॉट फिल मोर देन 3 चॉइसेस. IISc में यू कैन नॉट फिल मोर देन 3 चॉइसेस, सो देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन. But then in some institute there is no restriction, so you should not start filling more than particular level. You should not do that. Now I come to, when I say general, then EWS is also similar to journal. EWS is also similar to journal. So EWS and journal category are more or less same. Now if I talk about OBC, then let me tell you OBC में क्या होता है, आपका थोड़ा सा नीचे चला जाता है. दिस इज 7.5 CGPA प्लस, 7.5 प्लस CGPA एंड 400 गेट स्कोर प्लस. 400 ही रखेंगे उसको, उससे नीचे नहीं. तो भी आपको ओल्ड IITs में से कॉल, मैं ओल्ड IITs बोल रहा हूं, ओल्ड IITs में से कॉल आता है. एंड दैट आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स. इफ आई टॉक अबाउट नाउ SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में अगर तुम्हारा 7 प्लस CGPA है, शेड्यूल कास्ट में अगर तुम्हारा CGPA 7 प्लस है और अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई भी है, गेट क्वालिफाई है और तुम उन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां से कॉल आता है. आई एम टेलिंग यू कॉल आता है. दिस इज नॉट कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं, कॉल आता है. और जितना काम शायद YourPedia ने किया है इसमें डोमेन में, किसी ने नहीं किया है. एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी. All these institutes and all these teachers are good, not a problem, but I'm saying that lot of work has been done by the mentors. The mentors of YourPedia have done lot of extensive work. So यहां से कॉल आता है SC के लिए. एंड अगर आप ST कम्युनिटी के हो एंड PWD कम्युनिटी के हो, शेड्यूल ट्राइब, एंड फिजिकली
पीपल विद डिसेबिलिटी, देन आप अप्लाई कर दो। अगर आपका गेट क्वालिफाई है, अप्लाई कर दो, आपको कॉल आ जाता है। दीज आर नॉट द क्राइटेरिया देन, क्योंकि एसटी और पीपल विद डिसेबिलिटी नहीं मिलते हैं, ये कैटेगरीज के लोग कम मिलते हैं। सीट्स ज्यादा हैं, लोग कम हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि एसटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, सीट्स कम हैं, सीट्स ज्यादा हैं। लेकिन आपको क्या है, उसको मैक्सिमाइज करना है। यू हैव टू मैक्सिमाइज इट, एंड इफ यू मैक्सिमाइज इट यू गेट अ चांस। एक और चीज तुम्हें बताऊंगा, अभी इंपेशेंट नहीं होना है, डोंट बी इंपेशेंट। बेस्ट ऑप्शंस आपको जो मिलती हैं वो बेस्ट ऑप्शंस टुवर्ड्स एंड मिलती हैं, टुवर्ड्स एंड। जब ये सारा काउंसलिंग का एंड अप्रोच करता है तो आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलती हैं। व्हाई? बिकॉज देयर आर स्पेशल राउंड्स, देयर आर स्पेशल राउंड्स जिनको स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, वहां तक कोई नहीं पहुंचता। स्पेशल राउंड तक बहुत कम लोग जाते हैं। 785 belligerent aspirant, why don't you apply in NITIE Bombay? You should apply in NITIE Bombay. 760 प्लस में NITIE Bombay से कॉल आएगा फॉर श्योर। सो स्पेशल राउंड एंड स्पॉट राउंड तक लोग नहीं जाते, एंड इफ यू गो टू स्पेशल राउंड एंड स्पॉट राउंड देन लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस पॉप अप, बहुत सी अच्छी ऑप्शंस वहां पे निकलती हैं। इस बार I think there are 25 courses in different IITs, triple IITs and NITs are starting. पिछली बार ये नंबर 7 से 8 था। Last year 7 to 8 new courses started. This year, as per my knowledge, 25 new courses are coming. So when are they coming? Are they coming in the month of March or April? Not all the courses are coming in March and April. Some courses are going to come in May and June. Some courses are going to come in May and June. जब ये courses आते हैं तो students do not see these courses which are coming. If you see these courses and if you apply, then probability of getting in these is very high. So very less students are aware about these courses at that time. So if you plan about that, IIT Bombay IEOR cutoff maybe 800 plus last year, general category. IEOR Bombay general category maybe more than 800, but that is for MTech program, not PhD or MTech RA. I don't know MTech RA is there. I'm not recapitulating now, but PhD में एक बच्चे का गया था बहुत कम स्कोर पे, उसका हुआ था लास्ट ईयर। सो मई एंड जून में ये केसेस आएगा एनआईटी से, आईआईटी से, ट्रिपल आईटी से। These things come. Sometimes it is easy for you to enter into some course without TA and later on you get the TA. आपका बिना टीए के आप चले जाते हो लेकिन बाद में आपको टीए मिल जाता है। Sometimes you get that. It is easy for you to get into that. So that option also is there. So these new courses also you keep in mind. These new courses will pop up for you this particular year. वो इस साल वो आएगा, courses मिलके आएगा। I tell you one more thing, thumb rule I give you. Wherever SOP or SOR is required, wherever SOP, SOR is required, you must apply. Competition is less. You must apply because competition is less. But it should be written properly. There's a format of that. अभी SOP, SOR में क्या लिखना है? I have already uploaded up videos. You can listen to those videos. SOP, SOR में क्या होना चाहिए? There are already the videos on YouTube channel of YourPedia. Please listen to that and you can make your SOP and SOR accordingly. And that SOP, SOR department may also ask. IIT मद्रास में SOP मांगता है वो हमेशा, एंड वो SOP को देखता है। जब आपका इंटरव्यू होगा, when your interview is there, they will see that SOP. I tell you a story of last year. One student got into DOMS Madras in MS. How he got into DOMS Madras? Let me tell you that. The student was from agriculture background. Student was from agriculture background.
I think 600 gate score or something. He got a call from there, and he made a very good SOP for that. And during mock, mentor asked him a question that what do you mean by supply chain of एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं तुम्हारे, उनके सप्लाई चेन से क्या मतलब है तुम्हारा? हाउ डू यू मेंटेन दैट? एंड द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दैट इंटरव्यू आल्सो. सो एसओपी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. You never know, the same kind of question will be asked to you. This is something which you have to do it. See, if you want VLSI in top 5 institute, you can apply there also. You can apply there also. But my point is explore the options also. Explore other options also. With that score, I think VLSI तुम्हें मिल जाएगा. Belligerent. You'll get that. If you have job experience, many of you are having relevant job experience. If your job experience you have, or if your research work is good, or if your research work is good, or you are girl candidate, if you have a job experience, if your research work is good, if you are a girl candidate, you must mail the professor. You must mail professor. Why I'm saying girl candidate? IITs want large number of girl students to have parity, equality. As of now, number of girl students in IITs in technical institute is very less. Every technical institute wants more number of girl candidates. Every technical institute want more number of girl candidates. As of now, very less number of girl candidates are there in IITs. So the moment you drop a mail to professor, what I have observed, they will reply you back. And that is easy entry. I will not say easy entry, but I will say another entry into IIT system. You should do that. Why I'm saying research work? You can impress the professor through research work. You can tell the professor, this is the work I've done, and the professor is going to listen to you. आप उसको बताओ कि मैंने ये काम किया है, आपका काम भी इसी डायरेक्शन में है, और मैं आपके अंडर ज्वाइन करना चाहता हूं. You have to tell that. And that works. Job experience. Why job experience? See, अगर आपने जॉब किया है तो उसको प्रोफेसर अच्छा मानते हैं प्रोजेक्ट के लिए. प्रोजेक्ट के लिए प्रोफेसर उसको अच्छा मानते हैं. And if you identify 10 to 15 professor, I tell you now, last year क्या हुआ? There were some students who dropped mails to professors. उन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला, कहीं से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रोफेसर्स ने उनको अप्रोच किया कि इफ यू वांट टू ज्वाइन अंडर दिस प्रोजेक्ट विद मी, यू आर मोस्ट वेलकम. भाई प्रोजेक्ट के लिए भी तो लोग चाहिए ना उनको. वहां पे जैसे तुमने देखा है, दो चीज होता है, एक JRF होता है, एक SRF होता है. ये क्या चीज है? ये रिसर्च फेलो हैं. ये प्रोजेक्ट के ऊपर भी लिए जाते हैं. दे आर ऑल्सो टेकन ऑन प्रोजेक्ट. आई थिंक इन IIT गुवाहाटी और IIT खड़गपुर, आई थिंक there is nothing like MS. There is only JRF SRF concept. You are taken in research fellow, you are taken as a research fellow, उसके बाद आपको MS में वो convert करवाते हैं. That culture is also there. You need to see that particular culture also, that is there. सुष्मित जायसवाल 727 OBC निटी से कॉल आएगा. लास्ट ईयर 680 पे निटी से कॉल आया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर ओबीसी को आई थिंक 700-680 के बीच में कॉल आया था ओबीसी को. तो 727 पे ओबीसी को निटी से कॉल आएगा. Praful, if your CGPA is more than 7.5, Praful, if your CGPA is more than 7 or 7.5, you are going to get call from even old IITs.
even from old IITs you are going to get call. So the moment you tell me that my GATE score is this, without telling me your CGPA, it cannot be told that whether you get a call or not. Without telling the CGPA, it is difficult for me to tell you about the GATE score. 491, 7.6 CGPA, Sahil, you will get call from new IITs, MTech of not your choice, but MS courses, you will get the call from your choices. If you are general category student, 641 OBC mechanical CGPA 8.55. Now see this carefully, 8.55, 640 OBC mechanical. Old IITs, MTech, MS calls, इवन सटारा IIT बॉम्बे से भी कॉल आया था इस क्रेडेंशियल पे लास्ट ईयर। और मैंने एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन जो किया था सटारा बॉम्बे में, देयर इज अ फेलोशिप बाय यूनाइटेड नेशंस, and you get very good jobs through IIT Bombay. Like Satara kind of department, rural technology kind of departments, they are very good departments to work with. 492 OBC 9 CGPA, 492 9 CGPA OBC mechanical. Wherever you apply for PhD, direct PhD course, you will get a call. Wherever you apply for direct PhD. You know, in management courses, we have seen there are many PhD courses, management PhD courses. IIT कानपुर डायरेक्ट PhD यहां से भी कॉल आएगा, IIT मद्रास यहां से भी कॉल आएगा। लेकिन सर PhD नहीं करना है, क्या होगा मेरे को तो PhD नहीं करना है। तो मैं आपको बता तो रहा हूं, there are ways you can do really good work with the professor, convert it into project or something and convert it later on. डिसीजन साइंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन। डिसीजन साइंस जो है, नेक्स्ट जो मेरा प्रेजेंटेशन में मैं एक सेशन करूंगा रिलेटेड टू सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स विच आर वेरी गुड, लो स्कोर पे जाते हैं लेकिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, उसके ऊपर एक का सेशन करेंगे। जैसे डिसीजन साइंस आपने बताया, डिसीजन साइंस, cognitive science, you know, we went to IIT Gandhinagar. YourPedia did the academic profiling of IIT Gandhinagar, you know that. We went to IIT Gandhinagar. There is a cognitive science in IIT Gandhinagar. लोगों को पता नहीं है, आइडिया नहीं था। ये कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, इसमें सारी ब्रांच के लोग जा सकते हैं। हम एक बच्चे से वहां मिले, वो ब्रांच मेरे को भूल रहा है, पता नहीं उसका ब्रांच क्या था, टेक्सटाइल था क्या था, और क्लासेस में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर आते हैं, कॉग्निटिव साइंस, आईआईटी गांधीनगर में। और प्लेसमेंट जितनी कंपनीज आती हैं आप उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि तुम्हें टीपीओ को ये बताना है कि मैंने ये सीखा है। एंड कॉग्निटिव साइंस इज माइंड से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है, बिहेवियरल साइंस है ना कॉग्निटिव साइंस, तो इसमें वो अलाउ करते हैं, आपको बैठने के लिए अलाउ करते हैं, आप बैठ सकते हैं उसमें। यू कैन सिट इन दोज प्लेसमेंट्स। ME 485 9+ CGPA, certainly you will get IISc। 485 CGPA 9 ME, can I get IISc? Answer is yes,
कॉल आ जाएगा, 100% कॉल आएगा IISc बेंगलोर से, 100% बता रहा हूं। उसको तुम कन्वर्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, दैट इज अप टू यू। सर ये कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए इसमें? मेक अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क विच यू वांट टू डू। अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ जो काम तुम करना चाहते हो। प्रोफेसर को मेल डालो, YourPedia बोल रहा है तुम्हें मेल डालने को। देखो जो नई चीज होती है ना, जो नया एक्टिविटी तुम करना स्टार्ट करते हो, उसमें रिजल्ट आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेल करनी है प्रोफेसर को, एकेडमिक CV भेजना है प्रोफेसर को। अभी तक YourPedia में 10+ बच्चों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका है इस चीज का। IIT दिल्ली से, IIT गांधीनगर से प्रोफेसर ने बोला है यस यू अप्लाई, आई विल कंसिडर यू बिकॉज यू अप्रोच द प्रोफेसर। Let me tell you one more information here. More project seats this year with IIT professors, IITs and these reputed institute. Why? 2 साल से प्रोजेक्ट्स विद होल्ड पे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ था। जब लॉकडाउन लगा है तो क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अंदर बच्चे ही नहीं है, कैंपसेस में बच्चे ही नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? अभी जैसे लॉकडाउन से हम बाहर आ रहे हैं, बहुत सी प्रोजेक्ट ऑप्शंस ओपन हो रही हैं प्रोफेसर्स के पास। एंड इसलिए मैं जो बोल रहा हूं तुम करके देख लो, तुम एक अच्छा सा मेल ड्राफ्ट करके प्रोफेसर को भेजो। लेकिन ऐसे नहीं कि सर आई वांट टू वर्क अंडर यू, ऐसे नहीं लिखना है उस पर। आपने मेल को अच्छे तरीके से फ्रेम करना है। वो मेल को कैसे फ्रेम करना है वो एक वीडियो डाला है मैंने राहुल के साथ, उसको सुनो और अच्छे से मेल डाल दो प्रोफेसर को। आप 3 प्रोफेसर को मेल डालो, एक का रिस्पॉन्स विद इन अ वीक आएगा आपको। करके देख लो, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, तुम्हें करके देखो। लेकिन क्वेश्चन इज के मेल वैसे ड्राफ्ट करनी है जैसे उस वीडियो में बताई है, वैसी मेल डालनी है, पर्पसफुल मेल होनी चाहिए। साथ में आपको अपना एकेडमिक CV भेजना है। अब इसके लिए ओपन सेशन जल्दी ही कंडक्ट होंगे, राहुल के साथ, अंकित के साथ जल्दी ओपन सेशन कंडक्ट करेंगे कि आपको मेल वगैरह कैसे डालनी है, एकेडमिक CV कैसे बनाना है, वो करो। वो चार्ज नहीं ले रहा है YourPedia, वो फ्री कर रहा है YourPedia। सो यू डू दैट एंड स्टार्ट मेलिंग द प्रोफेसर। क्योंकि अगर तुम्हें यहां पे आदत पड़ गया तो फॉरेन में भी वही करना है, और फॉरेन में प्रोफेसर प्रोजेक्ट आपको दे देता है, उसका पैसा भी आपको दे देता है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, दैट इज नॉर्मली डन, दैट इज वेरी इजिली इट कैन बी डन, राइट? सो दिस इज द डोमेन, दिस इज द सो बहुत सी प्रोजेक्ट सीट्स इस बार आने वाली हैं, और उसमें बहुत सी प्रोजेक्ट सीट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड डोमेन में भी हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड डोमेन में बहुत सी प्रोजेक्ट सीट्स हैं, दे आर गोइंग टू कम देयर। एवरी वीक 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर YourPedia will come out with the live session, will come out with the live session 2 to 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट मेरा सेशन जो होगा दैट विल बी ऑन डाटा साइंस रिलेटेड टॉपिक्स, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस रिलेटेड डोमेन्स, कहां कहां पे ऐसी डोमेन्स हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और कहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक मेरा सेशन होगा ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर जिनको हम लोग हिडन डिपार्टमेंट बोलते हैं। आपने ये नाम पहली बार YourPedia में सुना होगा, हिडन डिपार्टमेंट। मैं कुछ ऐसे नाम बताता हूं आपको जो ओनली YourPedia ने स्टार्ट किया था, उसी पे स्टार्ट हुआ है एक हिडन डिपार्टमेंट। सटारा को बच्चे नहीं जानते थे बहुत ज्यादा, 3 साल पहले तक सिटारा वॉज हिडन डिपार्टमेंट, पीपल वर नॉट नोइंग, वेरी लेस स्टूडेंट्स वर नोइंग कि यूनाइटेड नेशन में जॉब लगती है, यहां से फेलोशिप प्रोग्राम है यूनिसेफ का। देन पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग इट। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कोग्निटिव साइंस, IIT गांधीनगर, जनता को पता ही नहीं है कंप्यूटर साइंस है ये। अगर मैं तुम्हें बोलूं कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करोगे IIT में, तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। मैं बोलूंगा कॉग्निटिव साइंस ज्वाइन करोगे, बोलते सर वो क्या है? हिडन डिपार्टमेंट है। डिसीजन साइंस, डिसीजन साइंस
ज्वाइन करोगे, दिस इज ऑल्सो कंप्यूटर साइंस। सो ये कुछ डिपार्टमेंट, हिडन डिपार्टमेंट। मैकाट्रॉनिक्स कहां पे? मैकाट्रॉनिक्स इन IISc शिवपुर, Mercedes Benz is coming for placement for the last 3 years. There are so many hidden department. Hidden department पे ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं, हिडन डिपार्टमेंट कितने हैं? मेरे को लगता है 30 such hidden departments are there which I can think of actually as of now. Hidden department का मतलब very low gate score and very high salary package. Placement is very good. There are some 30 departments. Only thing is why I don't now reveal it, because many students who are registered they say sir आपने ये सारा कर दिया. Otherwise हैं वो departments, वो भी departments वहां पे eligible, आप उसमें जा सकते हैं. You can join those departments also on the basis of your gate. And last but not the least, you people should write the exams. Write the exams जो हर इंस्टीट्यूट अपना ले रही है, उस एग्जाम को भी लिखो. जैसे IIT हैदराबाद एग्जाम ले रहा है, IIT जोधपुर एग्जाम लेगा, उसको भी लिखो. एंड स्टूडेंट गेट इनटू दीज इंस्टीट्यूट्स. लाइक IIT जोधपुर में आज हम इंटरेक्ट करने वाले हैं एक कैंडिडेट से. आई थिंक शी गॉट इनटू 490, आई थिंक जनरल कैटेगरी. शी गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस, आई थिंक इन IIT जोधपुर. आई थिंक शी वाज जनरल कैंडिडेट ओनली. 490 गेट स्कोर कंप्यूटर साइंस इन IIT जोधपुर. सो यू शुड नो दीज थिंग्स. वो हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है उनका डिटेल. वी हैव पुट दैट इन कम्युनिटी पोस्ट. यस हर्षित, यू हैव अ चांस फॉर दैट. 6:30 पे यू हैव अ चांस. 6:30 पे यू हैव द चांस फॉर दैट. नो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग लास्ट में. दिस ईयर लेट मी टेल यू, this year there are so many institutes which have started going for post gate guidance. That is very good. At least people have realized, at least now everybody is realizing that there are career in MTech, in MS, in PhD, in higher education. There is a career in this which people have started accepting this year. Otherwise coaching people never used to advise you for this. They used to say नहीं आप कोचिंग करो, पब्लिक सेक्टर जाओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज करो, एंड ये मत करो. I am happy that people have started realizing that there is option for this. And I am again telling you, ड्रॉप करके बेनिफिट नहीं हुआ है बच्चों को बहुत ज्यादा. 90% बच्चा ऐसा है जिसका ड्रॉप करने के बाद स्कोर नीचे चला गया है इस बार. So drop is not the option as of now. Don't do that. Be motivated and apply. Job market is booming. Job market में बहुत ज्यादा boom है. People are getting very good salaries. Market is opening up. This is the best time you can enter into the higher education courses and get a good job for you. You can do that. So you should explore the options. Low gate is not a problem. You will certainly get somewhere call. The moment you get some IIT, NIT, IIIT something, very first day be specific. मेरे को प्लेसमेंट लेनी है, मेरे को जॉब लेनी है, 15-20 लाख पर एनम से ऊपर मेरे को जॉब लेनी है. इफ वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर कैन टेक 18 LPA, दिस इज विदाउट गेट. इफ अ स्टूडेंट कैन टेक दैट, मान के चलो जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है. और ये इंस्टीट्यूट VIT या BIT जो इंस्टीट्यूट है बिरला वगैरह, वो काफी कंपनीज को बुलाते हैं. तो हमें कोई ड्रॉप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने 5-4 साल वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर पब्लिक सेक्टर. इफ वी आर गेटिंग बेटर सैलरी इन प्राइवेट सेक्टर. सो आप में से बहुत से बच्चे एक्सप्लोर करें ऑप्शंस, ट्राई करें और पॉजिटिव होकर ट्राई करें. डोंट बी नेगेटिव. नेगेटिव थॉट्स को ना तो एंटरटेन करना है, ना आपको नेगेटिव होना है. पॉजिटिव के साथ चलना है और एक्सप्लोर करना है. सून दोज ऑफ यू हु आर कनेक्टेड विद अस, उनको कॉल आएगा, वो रेगुलर जूम इंटरेक्शंस कर सकते हैं हमारे मेंटर्स के साथ. और उनको वो CV वगैरह और मेल कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे. YourPedia पे इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग ऑल्सो, अगर बहुत से कुक खाना बनाना स्टार्ट कर दें, अगर खाना बनाने के लिए बहुत से कुक इकट्ठे लपड़े,
तो खाना खराब हो जाता है। वैसे ही अगर बहुत से मेंटर एडवाइस कर रहे हैं अलग अलग, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टिक टू वन। आपने अगर योरपीडिया के साथ स्टिक करना है, जस्ट लिसन टू अस, दैट इज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज स्टूडेंट्स आर लिसनिंग हियर एंड देयर डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड टेलिंग अस कि सर उन्होंने तो ये बोला, उन्होंने तो ये बोला। दिस ईयर मेनी पीपल हैव पॉप्ड अप, स्टार्टेड गाइडिंग। प्लीज स्टिक टू एडवाइस ऑफ वन फेलो। अगर आप 4 डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे फॉर द सेम प्रॉब्लम, चारों के चारों आपको अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। डोंट डू दैट, जस्ट स्टिक टू वन एडवाइस। ये आपके ऊपर, आपने किसको सुनना है, दैट इज अप टू यू। लेकिन एक किसी की एडवाइस सुन के आगे चले रहो, एंड अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, राइट? Anyhow, then I wind up the session. I think you got some idea here. I'll wind up the session today. Keep watching for other informative sessions on YourPedia. I'm really thankful you people joined us. We have a lot of options this season. All of us will enjoy a good career and will go to good courses. Thank you and see you in the next class.